जी तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्लिसरीन जो कि आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी केमिकल के तौर पे काम करती हैं। आज हम ग्लिसरीन का रिएक्शन कराएंगे KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। इसमें KMNO4 है और ये है ग्लिसरीन जो आम मेडिकल स्टोर से आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am still fearless. मोबाइल का इसने क्या हाल कर दिया, हमने नीचे मोबाइल रखा था और ये शीशा भी इसने तोड़ दिया। तकरीबन 5 mm का शीशा जो इसने बिल्कुल मुकम्मल तोड़ दिया। ये हम छोटी सी एक और ट्राई करते हैं। ये हम KMNO4 डालेंगे पानी में और फिर उसमें डालेंगे ग्लिसरीन। तो देखते हैं कि तब भी ये रिएक्ट करती है, इसे आग लगती है या कुछ भी नहीं होता। ये देखिए, ये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चीज़ के साथ। मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि ये अब भी रिएक्ट करती हैं या नहीं। जी तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? हमें तो बहुत मजा आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। और ये रेड बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसे सब्सक्राइब करके दबा दें, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सबसे पहले वीडियोस आपको मिल सकें।